warm welcome to everyone. Uh, Dr. Madaan will be joining us soon. Hello, everyone. Is someone out there listening to me? Am I audible? Yes, ma'am, you're absolutely audible. Welcome. Wonderful. Thank you. Yeah, Pranay, we can start now. Yes. A very warm welcome to all at Sandook, the treasure trove not just of jewelry, clothes, art, food, and decor, but also eminent personalities in their fields. Thanks to technology, हम घर बैठे बैठे एक दूसरे से connect कर पा रहे हैं. And we are able to present to you the gem from our Sandook, Dr. Madaan. She wears multiple hats and not only manages but excels in each one of them. इनके चर्चे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने तक हैं. She is not only the face of modern Indian astrology, but also a very successful Vastu expert. Her other fields of expertise include palmistry, numerology, face reading, graphology, and she's also a transformational life coach. With loads of awards and accolades to her name, let's join together to welcome the very talented and mesmerizing, our very own Lady of Fortune, Dr. Jai Madaan. A note to the viewers, we'll be taking up questions and answers later. So please post your queries or all your questions in the chat box, please. Over to you, Dr. Jemadan. Thank you so much for inviting me. First of all, and it's all new to us, to you, to me, to everyone. We're facing a new world, a new time. So definitely, there's going to be a new festival time as well, and so are the new exhibitions. And I'm glad we are all coping up because that's what is necessary. So as we discuss that, the topic that we hold today is about inviting Mahalakshmi, and it's not just for this year, it is for years and generations to come. So yes, I will keep in mind, what we can do and what we cannot do because of the current circumstances of COVID. But I'm also going to discuss about certain things that we, as our culture explains us of celebrating Diwali, and we tell our children to buy new clothes and uh, have sweets and do puja, but there's something more that we can give to our generation, and a better understanding, a clearer understanding that why we should do that, what is it going to add to our life, and what does it do to your mind to change everything around it. So are we all ready to understand and go for a little trip of understanding into our little rituals, and how can it progress us to grow and actually invite Mahalakshmi in our lives? How do we understand it and how do we manifest in our lives? So with this, I would like to welcome all of you for this session and to be part of it, part of Sandook, and start what I'm planning to share with you. So when we talk about Deepavali and the whole process starts, it's a 5-day festival, but it all starts from Dhanteras, and then there are different deities involved and then different ways involved. We just do it in a more ritualistic way. दिवाली है, नए कपड़े पहनने हैं, मिठाई खानी है, अच्छे से तैयार होना है, लोगों के घर गिफ्ट देने हैं, गिफ्ट खोलने हैं, all that. But there's a more hidden meaning to it. And I'm ready to share those hidden insights with all of you to bring the actual prosperity in our lives. Other than Diwali also, it will only happen once we understand it. So जब आप दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इवेंट स्टार्ट होता है धनतेरस से. नाउ वेरी ब्यूटिफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे डेमी गॉड से गॉडेसेस और एनलाइटेंड वे में जाता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं दीपावली पर धनतेरस की, वेयर वी से कि अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है.
धनतेरस पे हम 2 काम करते हैं। एक हम कुबेर देव जी की पूजा करते हैं, जिन्हें यक्ष लोक इज इट्स अ प्लेटफॉर्म और इट्स अ रेल्म ऑफ डेमी गॉड्स, तो जिन्हें यक्षों का राजा कहा जाता है। तो यक्ष जो हैं, दीज आर मैसेंजर्स बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो कुबेर जी का जो पर्पस है या जिस तरह से उनकी पूजा की जाती है, ही इज कॉल्ड द वन हु टेक्स केयर ऑफ वेल्थ, ही इज द ट्रेजरर ऑफ वेल्थ। तो हम पूजा करते हैं कि हमारे पास जो आज है, जितने भी पैसे और वेल्थ पर हम हैं, ये कैसे स्टेबल रहे, तो हम कुबेर जी को इन्वोक करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी प्रे ऑन धनतेरस इज फॉर धनवंतरी। धनवंतरी का भी जो वो निकली थी माँ लक्ष्मी की तरह, वो भी इज अ गॉड ऑफ वेल्थ, ही इज आयुर्वेदा के देवता। इनका ये निकले थे समुद्र से। सो वी स्टार्ट द होल प्रोसेस विथ wealth what we have to restore it and also with health। तो जब हम हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज पा लेते हैं, तो नेक्स्ट डे हम जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी मतलब enhance the beauty, the admiration, the nature, enhance it. Other than that, we also go towards the path of victory। तो इस दिन से हम माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुरू करते हैं। जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एक्चुअली इतने सालों से, सदियों से मैं सबको देखती आई हूँ, सुनती आई हूँ, दैट वी जस्ट डू माँ लक्ष्मी एंड गणेश जी पूजा ऑन दीपावली, दैट इज इट, दैट इज हाउ वी एंड द होल प्रोसेस। दैट्स नॉट इट। हमारे यहाँ पर हमेशा ट्रिनिटी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी की Trinity. So we have always believed in Trinity, and that is the whole structure of pyramid to raise the energy. But Diwali पर हम Trinity की बात नहीं करते। Actually यही हमसे गलती होती है। I was told to speak about it, to share this insight with all of you, कि दिवाली पर भी हमको माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। With this I'm going to come on different tips and make you understand certain things. But माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आप गणेश जी को याद करते हैं बिकॉज उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता मतलब हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं टू इनवाइट वेल्थ इनटू आवर लाइफ। मगर ये वेल्थ हमेशा रहे, इसको सस्टेन करने के लिए हमें इंटेलिजेंस भी तो चाहिए। आपको आप एक 10 साल के बच्चे को 10 करोड़ रुपए दे दें, क्या वो बच्चा उस वेल्थ को रिस्टोर कर सकता है इंडिपेंडेंटली? नहीं। लोग बेवकूफ बना देंगे, दोस्त बनेंगे, लोग लूट के ले जाएंगे। ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन। So we invite Ma Saraswati during this festive time to give us intelligence, to give us insights, to raise our wealth, to handle our wealth. That is why this Trinity is very, very important. So what is the whole procedure and the whole way of doing it? सबसे पहले आप गणपति जी को इनवाइट करते हैं और आप बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ में फील्ड है, जैसे ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप इन वीड्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करें। गणपति जी रिमूविंग का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी से टू सो द सीड ऑफ वेल्थ, ताकि हम वेल्थ बना सकें, ग्रो कर सकें। फिर हम इनवाइट करते हैं माँ सरस्वती को टू क्रिएट द ट्रिनिटी, कि अब ये जो वेल्थ के बीज हैं, हम इसको कैसे उगाएं, किस समय पर हम फसल काटें, बीच में हम पेस्ट से और अलग अलग ऑब्स्टिकल से कैसे रिमूव करें, विजडम। So that is the whole beauty of inviting the 3 deities. लेकिन ये 3 deities ही क्यों? हम इस टाइम पर ब्रह्मा जी या विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते? गणेश जी का साइकोलॉजिकल रीजन देखिए हमें नहीं पता कि whether these were born or not, but what we have to understand and what we have to understand the whole science behind is that these are energy portals. What are these energy portals? आपके पास अगर नोकिया का फोन है तो आप नोकिया का चार्जर लगाएंगे और अपनी बैटरी चार्ज करेंगे फोन की। आईफोन है तो आईफोन का चार्जर लगाएंगे। आईफोन 4 है तो आईफोन 4 का चार्जर लगेगा। आईफोन 11 है तो आईफोन 11 का चार्जर लगेगा। These are all energy portals that needs to be invoked. जैसे जीसस क्राइस्ट हैं तो उनका अलग एनर्जी पोर्टल है। इट इज अबाउट कंपैशन, इट इज अबाउट सर्विंग मैनकाइंड। गुरु नानक देव जी का अलग एनर्जी पोर्टल है। इट इज अबाउट having faith, surrendering to the Lord. Krishna is about again surrendering and bhakti. Similarly, Ganesha ka portal is about remove problems in your life. Ma Lakshmi ka portal is about bringing and inviting prosperity in your life. And Saraswati Ma ka portal is to have more wisdom, knowledge and skills in your life.
सो गणेश जी की फैमिली को समझते हैं कि गणेश जी हमें एक्चुअली देते क्या है, हम क्यों पूजते हैं गणेश जी को, गणेश उत्सव करते हैं, व्हाट इज द होल साइंस बिहाइंड इट. Ganesh ji removes obstacles. So when you remove obstacles, you get two things in your life, your wives or your consorts. That is Riddhi and Siddhi. Riddhi means prosperity or comforts of life, जिसको हम बोलते हैं सुख मिला. और सिद्धि, सिद्धि को हम बोलते हैं स्किल, ऐसी चीज जिसमें हमारी लाइफ में स्किल होती है, जिसमें हम स्किलफुल होते हैं. तो जब हम ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं तो हमारी लाइफ में स्किल्स आती हैं और सुख आता है. जब हमारी लाइफ में सुख और स्किल्स आते हैं तो दो बच्चे आते हैं, शुभ और लाभ, जो गणेश जी के बच्चे हैं. दैट मीन्स सब कुछ ऑस्पिशियस होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, और लाभ मतलब अब हमें प्रॉफिट होगा. तो गणेश जी हमें ये फैमिली ट्री देते हैं. माँ सरस्वती को आप देखते हैं, उनके 4 हाथ में 4 अलग अलग चीजें, एक में वेद होते हैं. दैट मीन्स नॉलेज दैट वी अक्वायर, जो हम दूसरे का पढ़कर सीखते हैं, वो ब्लेसिंग हमें माँ सरस्वती देती हैं. नेक्स्ट थिंग दैट शी हैज इन हर हैंड इज रोजरी, यानी कि जपने की माला. जपते हम कब है, जब हमें किसी चीज को मेमोराइज करना होता है. तो माँ सरस्वती गिव्स अस गुड मेमोरी, knowledge from others. She has a veena in her hand that is about skill and entertainment. And the next thing that she has in her hand is, कलश होता है उनके हाथ में पानी का. पानी has an attribute to flow. That means to improve our creativity. तो जब भी हम अपने घर में कौन से एरिया में क्या लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, इसके बदले हम कौन सा सिंबल लगा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी. लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये हमें नटशेल में देते क्या हैं. तो गणेश जी हमें स्किल्स देते हैं, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना देते हैं, एंड में हमें प्रॉफिट देते हैं. माँ सरस्वती हमें अच्छी मेमोरी, अच्छी स्किल्स, एक अच्छा एंटरटेनर बनाती हैं, अच्छी मेमोरी देती हैं. अब माँ लक्ष्मी भी हमें वेल्थ देती हैं, लेकिन कैसी वेल्थ, मतलब किस तरीके की वेल्थ देती हैं, व्हाट इज वेल्थ फॉर यू. तो ये हमें 8 तरीके की वेल्थ देती हैं. जी हाँ, माँ लक्ष्मी इज नॉट अलोन. व्हेन यू इनवाइट हर, व्हेन यू विल इनवाइट हर दिस दीपावली, शी इज गोइंग टू गिव यू 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेल्थ. व्हाट आर दीज 8 काइंड्स ऑफ वेल्थ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब आप इसको समझेंगे तो हमें इसे अपने घर में कैसे लाना है, कैसे अप्लाई करना है इस नॉलेज को, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेल्थ. सबसे पहले ये एक महालक्ष्मी के अवतार में आती है, यानी कि एक रॉ अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आती है. पैसा कमाना है, अब कोविड है, नए नए बिजनेस ढूंढने हैं, तो नई अपॉर्चुनिटी चाहिए ना लाइफ में. ये नई अपॉर्चुनिटी महालक्ष्मी देती है, या जिन्हें आदि लक्ष्मी भी कहा जाता है. आदि मीन्स द न्यू बिगनिंग. तो लक्ष्मी माँ हमें देती है न्यू बिगनिंग ऑफ वेल्थ. जो अगली चीज ये हमें देती हैं, ये देती है विद्या लक्ष्मी. विद्या लक्ष्मी मीन्स कि हमें पैसे के साथ साथ समझ आए, ये भी ये बून या ये स्ट्रेंथ हमें देती हैं. थर्ड थिंग दैट शी गिव्स अस इज ऐश्वर्य लक्ष्मी. आपके पास पैसा आ गया, आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने, आपने ज्वेलरी अच्छी नहीं पहनी, आपका ऑरा ही नहीं है, आप में वो एनर्जी नहीं है, वो बात ही नहीं है, वो एनर्जी, वो बात, वो ऑरा, वो एक वाव फैक्टर ऐश्वर्य लक्ष्मी लेकर आती हैं. तो जब आपके पास ऐश्वर्य लक्ष्मी आती हैं, तब सिर्फ हम कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि दिखने में वेल्थ तो बहुत है लेकिन एक्चुअली कैश नहीं है. तो एक्चुअल कैश हमें देती हैं धन लक्ष्मी. इनके आसपास बहुत सारे सिक्के होते हैं, इनकी निशानी होती है. यू कैन फाइंड ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम द गूगल. सो धन लक्ष्मी गिव्स अस एक्चुअल वेल्थ, रियल कैश, लिक्विडिटी ऑफ मनी. जब लिक्विडिटी ऑफ मनी आती है तो हम उसको उजाड़ ना दें, उसको खत्म ना कर दें. तो हमारी लाइफ में हमें इन्वाइट करना चाहिए धैर्य लक्ष्मी को, जो हमें सब्र देता है. जो हम बोलते हैं ना कि मनी टॉक्स बट वेल्थ विस्पर्स, ये बात हम करते हैं. तो जो पैसे के साथ सब्र, जो ह्यूमिलिटी, जो लियाकत होनी चाहिए, ये हमें धैर्य लक्ष्मी देती है. इसके बाद आती है संतान लक्ष्मी की. हमें पैसा तो मिल गया, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमारी असली इन्वेस्टमेंट, हमें बच्चों का सुख मिला कि नहीं मिला, ये हमको संतान लक्ष्मी देती है. और इसके बाद हमें माँ लक्ष्मी का जो 7वां बूंद, जो 7वां आशीर्वाद मिलता है, दैट इज कॉल्ड विजय लक्ष्मी. यानी कि आप जिस भी रेल में हैं, हर कंपटीशन में आप सुपरसीड करें, आप ग्रो करें, इसके लिए आपको मिलती है विजय लक्ष्मी. टू विन इन लाइफ, टू ग्रो इन लाइफ. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी that you invite in your life, the last form of Lakshmi, the last boon of Lakshmi is called धान्य लक्ष्मी. धान्य मतलब धन मेरे पास है और मैं आपको धान्य कर रही हूँ. यानी कि वो फॉर्म ऑफ लक्ष्मी जो दूसरे को भी धान्य करे, दूसरे को भी फुलफिल करे.
Another name for धान्य लक्ष्मी is also called agricultural wealth, यानी कि खाने पीने का सुख। तो ये सारी चीजें हमको दिवाली पे मिलती हैं, आप समझ रहे हैं? दिवाली पे हमको प्रॉफिट मिलता है, हमें विजडम मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें बच्चों का सुख मिलता है। ये सारी चीजें एक फेस्टिवल दीपावली से हम इन्वोक करते हैं। लेकिन जब हमको इस चीज का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे इनवाइट करेंगे? आपने मुझे अपने घर इनवाइट किया और मैंने आपको कहा कि मेरे साथ में मेरा परिवार ही आ रहा है। आपने कहा जरूर अपने परिवार को लेकर आइए, खुशी से लेकर आइए। लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आ रहे हैं, कि मेरा बच्चे आ रहे हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, मैं साथ में अपने एम्प्लॉइज को लेकर आ रही हूँ, अपने स्टाफ। आपको कुछ नहीं पता व्हाट इज परिवार फॉर मी। आपने बोला हाँ हाँ जरूर आइए, आपकी तैयारी ही नहीं होगी, आप वेलकम ही नहीं कर पाएंगे, आप गिफ्ट भी कैसे दे पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग अलॉन्ग। Similarly, to understand what are we invoking in Diwali is it actually gives us clarity कि हम चाह क्या रहे हैं, हम बुला क्या रहे हैं, हम पूजा किसकी कर रहे हैं। अब दीपावली पर इस साल क्योंकि हम घर पर हैं, हम ज्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे, हम लोगों के घर नहीं जाएंगे, हम कैसे वो एनवायरनमेंट रखें कि हमारे घर पर प्रोस्पेरिटी रहे, हमारे घर पर खुशी रहे, हमारे घर पर एक्साइटमेंट रहे, हमारे घर पर प्लेजर आए, खुशी आए। हम 5 एलिमेंट्स को इन्वोक करेंगे। हम दीपावली पर या हर पूजा पर वो वैसे भी करते हैं। आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को सजाते हैं, आप लक्ष्मी जी को गणेश जी के राइट साइड पर विराजते हैं, बिकॉज राइट इज द साइड जहां से एनर्जी फ्लो होती है, क्लॉकवाइज एनर्जी चलती है। तो प्रॉस्पेरिटी से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो, हम इस तरीके से वो सेटिंग करते हैं। और राइट स्थान जो होता है वो मदर का होता है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो गणेश जी के लेफ्ट पर नहीं होनी चाहिए, हमेशा राइट पर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनका रिलेशनशिप, शी इज लाइक एन एल्डर टू हिम। अदर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब हम माँ सरस्वती को कहाँ रखें। माँ सरस्वती को हम माँ लक्ष्मी के भी राइट पर रख सकते हैं कि विजडम से पैसा आए और पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। यू नो, दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी द फ्लो ऑफ एनर्जी। फिर आप जब पूजा करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें पूजा में लगाते हैं। आप एक कलश लगाते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, आप एक लोटा रखते हैं पानी का, जल का। इसके साथ साथ आप कुछ फल रखते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, आप फूल रखते हैं, फूलों से सजाते हैं, आप धूप बत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या पर्पस है, इसको हम इस दीपावली कैसे इन्वाइट करें, कैसे इसको एक जगह पे भी कलेक्टिवली रखें और सैग्रीगेट करें ताकि हमारे घर में हम प्रॉस्पेरिटी को इन्वाइट कर सके। So the most important thing here that we have to understand is कि जो आप कलश रखते हैं दीपावली पर, जो आप जल रखते हैं दीपावली पर, the whole purpose of that जल is to flow the energy। माँ लक्ष्मी जल से उत्पन्न हुई थी, तो पैसा is meant to flow, it is not meant कि आप उसको बांध के रख सके। आप पानी को मुट्ठी में बांध के नहीं रख सकते ना। It is a symbolic of saying that energy has to flow। तो हम जल रखते हैं। अब जल को, अगर आपके घर में कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो की दिक्कत रहती है, तो वाटर को आप अपने घर में नॉर्थ में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस दीपावली आप एक खूबसूरत सी उर्ली रखिए। उर्ली आप जानते हैं ना, जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं और ऊपर से फूल वगैरह डालते हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स डालते हैं। इसमें फ्लोटिंग कैंडल्स नहीं डालना है। नॉर्थ में फायर एलिमेंट नहीं लाएंगे। अगर आप पानी के नीचे आग रख देंगे तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेट हो जाएगा तो फ्लो कैसे आएगा। इसलिए उर्ली के अंदर सिर्फ फूल डालें और इसको नॉर्थ में रखें to have a better flow of money this year. And you can start doing it 10-15 days before Diwali और 15-20 दिन तक उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। The next thing that we utilize in puja is हम धूप बत्ती, अगरबत्ती या धूप जलाते हैं खुशबू के लिए, हवा में धुआं फैलाते हैं, गुग्गल की धुनी करते हैं, लुबान जलाते हैं। What is this? It is air element। ये आपके ऑरा को चेंज करते हैं। What is air element in our life? Air element is our communication। हम बात करते हैं तो हवा निकलती है ना, हम एयर के मॉड्यूलेशन से बात करते हैं। So, अगर आपको अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को चेंज करना हो, आप कुछ देर के लिए कोई अच्छा अरोमैटिक कैंडल जला दें या धुआं कर दें। बेसिकली धुआं करना चाहिए, जिससे सारा माहौल चेंज हो जाता है। इट क्रिएट्स पॉजिटिविटी, इट इज फॉर ग्रोथ, क्योंकि वो एनर्जी, वो धुआं ऊपर जाता है। सो इट एलिवेट्स द होल एनर्जी। आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में डेली बेसिस में भी लोबान या गूगल की धुनी कर सकते हैं। ये करने पर
आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव माहौल रहेगा, सिर्फ दिवाली पर नहीं, बाकी समय पर भी। थर्ड थिंग दैट वी यूज इन पूजा इज वी लाइट दिया, हम दिया जलाते हैं। और जब हमारे घर पर गेस्ट आने होते हैं, जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं, तब भी हम घर पे कैंडल्स जलाते हैं, कैंडल्स सजाते हैं, डाइनिंग एरिया में कैंडल्स लगाते हैं। तो कैंडल लाइट इज टू हैव मोर फेम, हैव अ मोर प्रॉस्पेरिटी एंड व्हाट डू आई से अट्रैक्शन एनर्जी विद इन योर हाउस। अगर आपके घर में नजर बहुत ज्यादा लगती है, इविल आई का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि लोगों के अंदर फायर नहीं है टू ग्रो, फायर नहीं है टू प्रॉस्पर, एक फायर होनी चाहिए ग्रोथ की, अगर वो घर के मेंबर्स में मिसिंग है, घर में एक एनर्जी नहीं है ऑफ फेम, आपका यश नहीं है, तो आप अपने घर में रेगुलरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक रेड कैंडल जला सकते हैं, एक छोटा सा दिया जला सकते हैं। जब आपके घर में गेस्ट आए, आपके ऑफिस में क्लाइंट्स आए, आप एक साउथ ईस्ट में छोटा सा कैंडल जला सकते हैं। दिस इंक्रीजेस द ऑरिक फील्ड ऑफ द हाउस, आपके घर का, आपके काम का, आपका खुद का ऑरा बढ़ता है, लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपका यश बढ़ता है, इस तरह से चीजें होती हैं। The fourth thing that we use in our puja during Diwali and everyday puja also, हम फल रखते हैं, हम सॉलिड फ्रूट रखते हैं, और कर्म का भी फल होता है। कृष्ण ने भी कहा, गीता में भी लिखा गया कि फल की अच्छा मत करो। फल मतलब द एंड रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। एक बीज जो है वो फाइनल फॉर्म में क्या रिजल्ट देता है, फल का रिजल्ट देता है, जिसको हम खाते हैं, और फल मीठा होता है। और फल तो सबको ही अच्छा लगता है, हु डजंट लाइक फ्रूट, तो मेहनत का फल हो या गिफ्ट मिले, फ्रूट सबको अच्छा लगता है। सो जो फ्रूट हम पूजा में रखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल आउटपुट ऑफ आवर एफर्ट्स। हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो फल का फॉर्म होता है। इसको अर्थ एलिमेंट भी कह सकते हैं। सो अर्थ एलिमेंट को जब आप साउथ वेस्ट में रखते हैं अपने घर के, आप पूजा दीपावली पर करते हैं या रोज भी करते हैं, तो आप फ्रूट को, सिंपल फ्रूट जैसे अनार का फ्रूट ले सकते हैं। अनार से मुझे याद आया कि मैं आपको बताऊं कि अनार इज फेवरेट फ्रूट ऑफ माँ लक्ष्मी। वाई? और अनार ही क्यों, एप्पल क्यों नहीं, ऑरेंज क्यों नहीं? एक तो ये कि अनार मीठा होता है, जूसी होता है, इसका रेड कलर होता है, विच इज वन ऑफ द फेवरेट कलर्स ऑफ माँ लक्ष्मी। आप माँ लक्ष्मी को येलो, ग्रीन या ब्लू कलर में नहीं देखते, आप उन्हें रेड में देखते हैं। देयर इज अ सर्टेन लॉजिक टू दिस कलर। दिस कलर हैज मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट, ये कलर मल्टीप्लाई करता है। एंड अनार भी रेड कलर का है। अनार में मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट है। एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स हैं, मतलब बहुत 100 सीड्स हैं, और वो 100 सीड से एक ट्री उगेगा, एक ट्री से हजारों अनार आएंगे, हजारों अनार से लाखों बीज आएंगे। सो इट हैज मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट। तो आप अपने घर में साउथ वेस्ट में कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं टू हैव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, टू हैव स्टेबिलिटी इन योर होम, टू गेट इफेक्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कहते हुए सुनती हूँ कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, थक गए मेहनत कर करके, लेकिन एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता। उस रिजल्ट के लिए साउथ वेस्ट में फ्रूट्स रखिए, और उन फ्रूट्स में आप एक छोटा सा अनार जरूर रख सकते हैं, बनाना जरूर रख सकते हैं, बिकॉज बनाना बंच में उगता है, ये फैमिली और काम को एक साथ जोड़ कर रखता है, और अनार इज मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट। इनको साउथ वेस्ट में रखने पर आप अपने घर में स्टेबिलिटी लाते हैं, हार्ड वर्क का रिजल्ट लाते हैं। And the fifth thing that we use and we do and we perform in a puja is we say chants. हम आरती बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, हम प्रे करते हैं। The sound vibration that comes out is space element. Space element is very important to give you marvelous ideas in life. जो ideas है, जो intuition है, जो gut feeling है, जो innovation है, ये space element से आता है। To bring that alive in your children, to have better innovation, to have more creativity, to have better ideas at work, you should always play a little soft mantra. आप गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, आप श्री सुक्तम सुन सकते हैं, आप किसी भी मंत्र को, ओम का चैंट अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में बहुत स्लो वॉल्यूम में लगा सकते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में विंड चाइम लगा सकते हैं। ये आपकी इनोवेशन और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। हम 5 एलिमेंट पूजा में जो यूज करते हैं, बेसिकली इट सिग्निफाइज
our strength, our collectivity as a human being. आपने जब आप किसी की कोई चला जाता है अपनी बॉडी छोड़कर, तो आप जाकर वहां सुनते हैं, आपको ऐसा प्रवचन सुनाते हैं कि हम 5 तत्वों से आए और हम 5 तत्वों में मिल गए। ये 5 तत्वों को अगर हम बैलेंस कर दें तो हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, तकलीफ आए ही नहीं। इन 5 एलिमेंट्स को अगर आप घर में बैलेंस कर लें तो हर दिन आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, हर दिन आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहे। These are the simplest ways by which you can balance your energies, you can balance your home, you can balance your life. With this, I'm open to your question and answers. And by the end of your question and answers, I am going to give you Deepavali tips of what you have to do this year, 2020, the year, to have more happiness and prosperity in your life. So I can request the co-host to ask the questions if people have any, and then we can go towards the Deepavali tips. And then I would like to thank your time. We have a question in. Is it good to light a red bulb in the southeast direction? Yes, it is very good and very important to light a bulb in southeast direction, because southeast is the direction of fire. And fire energy is also represented by a bulb, electricity, and red color is also fire. So when you light a bulb in southeast, जैसे हमने कहा कि आप कैंडल्स भी जला सकते हैं, साउथ में दिया भी लगा सकते हैं, बल्ब आपकी लिक्विड कैश की सिचुएशन को बेटर करता है. सो यस, इट इज गुड टू हैव a red bulb in southeast direction. Yeah, Jay, we don't have questions right now. We'll get back to it possibly. You can give us some more tips for this. Yes. So with this, I would like to give the Deepavali tips that how do we actually do little things this time in Deepavali to handle and manage more prosperity for us. Is Deepavali, because the year is 2020 and we could see the effect of Rahu on our lives. It's like beginning of a new era into our lives. So what we need to do this year is, आप अपने घर में इस instability के effect को कम करने के लिए this Deepavali specially नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अक्षत रखिए. अक्षत इज राइस जो टूटा हुआ नहीं होता, जो नॉर्मल सफेद चावल खाने वाला होता है, जो टूटा हुआ नहीं होता. इसका पहाड़ बनाकर इसको दीपावली से कुछ दिन पहले नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, और नॉर्थ वेस्ट में लगाने के बाद इस पर एक चांदी का सिक्का रखिए जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हों, और इसको अपने घर में 40 डेज तक स्टेबलाइज रखिए, इंटैक्ट रखिए. इसको आप धनतेरस से शुरू कीजिए. दिस इज गोइंग टू गिव अ मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट of this year's Deepavali in your life. We can have another question that has come and I can then give another tip. Yes. The next question that has come in, can we put diffuser in northeast? We can put diffuser in northeast. If we put diffuser in northwest, that is also very good. Both places have different effects. Northeast में जब हम diffuser लगाते हैं तो हमारे जो माइंड के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो दूर होते हैं. जब हम नॉर्थ वेस्ट में डिफ्यूजर लगाते हैं तो हमारे जो लोगों के बारे में व्यूज हैं या जो लोगों के हमारे बारे में व्यूज हैं वो ठीक होते हैं या वो स्मूदन आउट होते हैं. तो आप दोनों डायरेक्शन में डिफ्यूजर लगा सकते हैं. Should we worship standing Lakshmi Ganeshji or the sitting one? We should always do puja in of sitting postures of idols only, because any which ways माँ लक्ष्मी का नाम चंचला है, उन्हें चंचला कहा जाता है. सो चंचल मतलब जैसे छोटा बच्चा है, वो टिकेगा नहीं ना, वो चलता रहेगा. अगर आपको छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो आप क्या कहेंगे, सिट डाउन एंड स्टडी, बैठ जाओ. इसी तरीके से हम जो एनर्जीज अपनी लाइफ में स्टेबल चाहते हैं, कंसिस्टेंट चाहते हैं, उन्हें सिटिंग फॉर्म में ही पूजें. Lakshmi ji should be right of Ganesh from our angle or on Singhasan. Come again. Lakshmi ji should be in the right of Ganesh from our angle or on the Singhasan. On the no, from Ganesh ji's angle. From his angle. उनके राइट पर होनी चाहिए. Take गणेश जी as stationary और उनके राइट पर माँ लक्ष्मी. Can these elements be placed even in the office area?
Yes, they should be ideally placed in office area because that's where the real generation of money happens. अगर आपका you're not working from home, तो काम तो दफ्तर से ही हो रहा है ना. So if you have an office, please do place it there. Where should we make the pile of rice with the silver coin? In northwest direction because that is the direction of moon, and that is what, because it's 2020, do number aa gaye, and that what connects and makes a rahu, that is 4 number. So correcting and putting it in northwest direction will give you stability this year in Diwali. Where should we place peacock punk, and what are the effects of keeping a more punk in the house and office? मोर पंख को आप कार्तिकेय के साथ भी देखेंगे. दैट मीन्स इट गिव्स यू, कार्तिकेय इज द वॉरियर, राइट? तो ये आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है. माँ सरस्वती के साथ देखेंगे, सो इट रिमूव्स नेगेटिविटी. और माँ लक्ष्मी के साथ देखेंगे, इट इनवाइट्स प्रॉस्पेरिटी. तो पीकॉक फेदर को आप एक्चुअली घर की किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है. जहां ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है इज नॉर्थ ईस्ट. और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, प्लेस इट इन साउथ. और इसको आप to bring more opportunities in life or growth in life, have better friend circle, you can also have it in east direction. If the northeast of the house is blocked, how does it affect us and how to rectify it? अगर आपकी, हम बोलते हैं ना, देयर इज अ मुहावरा इन हिंदी कि इसकी अकल पे पत्थर पड़ गए, इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बुद्धि भ्रष्ट या दिमाग बंद हो जाना, अकल बंद है तुम्हारी, मंद बुद्धि हो. सो बुद्धि और इंटेलिजेंस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर होम. व्हेन इट इज ब्लॉक्ड, ये वैसे ही रिजल्ट देते हैं जैसे मैंने आपको मुहावरे बताए. We have some questions on relationships and business failures. Anita Gua is asking how to solve problems like repetitive relationship and business failures. Any tips? देखिए, when we have failures in life and they are repetitive, so business failures is a different domain and relationship failures is different domain. अब इनके 2 रीजन हो सकते हैं. एक कि आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उतना एफर्ट नहीं करते हैं. दूसरा है कि आप जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और बार बार धोखा हो जाता है. इट कुड बी योर फॉल्ट being over cautious and it could be your fault of being over dependent or ज्यादा ट्रस्ट कर लेना. दोनों ही सिचुएशंस में अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करें, 2 येलो बल्ब यहाँ पे लगा दे 0 वॉट के जो 24 घंटे चलते रहे, तो ये बार बार रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिजनेस फेलियर्स एंड रिलेशनशिप फेलियर्स कम हो जाएंगे. Some more Diwali questions coming in. Which sides to be placed, Kalash and Deepak? कलश को आप एक जैसे ऑल्टार बनाते हैं, हमारा मंदिर है, तो जो कलश है वो भगवान के नॉर्थ पे रखिए और जो दीपक है वो भगवान के साउथ ईस्ट पे रखिए. Evil eye hanging should be placed outside the main door. Evil eye hanging should be placed where the other person create an eye contact with evil eye. मतलब आप हवा में टांग देंगे, किसी को पता ही नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा. Evil eye का मतलब ही ये है कि आपकी नजर उस पर टिकनी चाहिए, तभी तो वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करेगी. और जब वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करे तो आपको ईवल आई को हफ्ते में 1 दिन, आइडियली ऑन अ सैटरडे, नमक के पानी से धोकर फिर लगाना चाहिए ताकि वो क्लेंस हो जाए और प्रोग्राम हो जाए अपने काम को वापस करने के लिए. In Diwali, we buy silver coins. Please let us know what's the right way to do puja of the silver coins. Silver coin ideally should be bought on धनतेरस, क्योंकि धनतेरस मीन्स धन को 13 गुना करना, multiplication of 13, right? So आपको उस दिन खरीदना चाहिए, विच इज अ साइन कि हम अपने घर में स्टेबल वेल्थ लाए. कैश इज मूवेबल, मतलब फिसल जाता है ना हाथ से, पैसे रखो और बाजार गए पता ही नहीं चला. जब हम मेटल लेकर आते हैं, इट मींस वी वांट स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ. तो इसलिए चांदी के सिक्के या गोल्ड के सिक्के खरीदे जाते हैं ताकि आप उनकी पूजा कर सके, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टेबल वेल्थ. Is it said that we should not clap when doing Lakshmi Aarti? Is it true? No, ideally clapping is valuable or it is understandable only in a way of understanding कि भजन में जहाँ रिदम हो वहां क्लैप करना चाहिए, क्योंकि when you clap और when you clap like this, तो ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं ये आपके ब्रेन को शार्प करते हैं टू अब्सॉर्ब द पॉजिटिविटी. बट आप आरती में या चैंट करते समय तो रिदम की बात ही नहीं है. यू हैव टू गेट मर्ज्ड विद द पूजा, तो वहां क्लैपिंग का कोई सेंस ही नहीं है. आप भजन में जरूर कर सकते हैं.
Whom do we pray to on Dhanteras and on Diwali? I mean, is it the same puja both times? धनतेरस इज अबाउट धनवंतरी. धनवंतरी को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल फाइंड a beautiful god, with a kalash in the hand like this, which holds amrit, that is the nectar of life. So उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, या उनका फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए to give us good health. And then health and wealth, as we say, we call Kuberji to have stable wealth in our lives. So that starts from Dhanteras. And then slowly going towards Mahalakshmi, Ganeshji, Ramchandraji for victory and henceforth. Okay. We should buy murti made of silver or mitti or bronze will do. If you can afford, then buy silver. If you cannot, buy mitti. Somebody wants to ask, which is asking, when will this corona matter get over? Slowly and gradually, it will be like a flu or a viral in our lives. It is going to be very impactful to us, till March. November में एक hype और आएगी इसकी, and then would be in February end. So once it happens to, most of the people, the fear of it will go. The vaccine is going to be little more dangerous than the disease itself. So go slow with the vaccine. So some more questions for Diwali. We are told that we started celebrating Diwali after Ramji returned to Ayodhya. Then why don't we worship Ramji on that day? See, because it is, the whole ideology is that we come back to the source. And what is our source in our life? Our source is happiness, to be prosperous, to be self-equipped, to be settled in life. So we call for, and Ramji, if we see the pattern and the way of Ramji, he is called Maryada Purushottam, but he had to set up different rules of righteousness in the life. And all we want in Diwali to go back to the source. And it is a festival जब कहा जाता है कि विष्णु जी का अवतार हुआ, मतलब it is mixture of lot of different gods and goddesses, जिसमें राम जी, because it was a journey of struggle, just got little lost. But by the way, let me tell you कि जो हम दिया जलाते हैं, जो दीपावली है, it is symbolic of Ram Ji's return only. दिए तब जलाए गए थे जब राम जी वापस आए थे. तो in a way, we all connect with Sri Ram also on Deepavali. What do we do with the rice that we place after 21 days? No, not 21 days, 40 days. 40 days. Somebody said 40, somebody said 21. Well, we have to start with few days before Diwali. Ideally, I would prefer you start from the day of Diwali. आप धनतेरस के दिन से उसको रखना शुरुआत करें और 40 डेज रखिए. 40 दिन हम जिस भी चीज को कर लेते हैं, वो कांस्टेंट पैटर्न बन जाता है हमारे माइंड में भी और लाइफ में भी. तभी चलिया होता है, रोजा 40 दिन होता है. ऑल दीज आर पैटर्न्स टू ट्रेन अस. तो इसको 40 डेज रखिए. 40 डेज के बाद इसको घर के गमलों में डाल दीजिए. राइस के पाइल को खाने में मिला दीजिए. वापस से इसको कंज्यूम कीजिए. ब्रिंग दिस प्रॉस्पेरिटी विद इन योर लाइफ. और सिक्के को कैश बॉक्स में रख दीजिए. How to recover the money from borrowers? Money is stuck. अभी कोविड में मत बात करो ये. Jay, I wanted to ask you something. Like today is a special day. It's 10/10/2020. What's your say on this? Well, beautiful way. The Sandook has organized a new, what do I say, a new trend of exhibitions, if I may say that. Secondly, you have to understand, when we talked about 2020, so 2020 is, so like two babies grow and become parents later. तो जैसे बच्चे होंगे वैसे ही माँ बाप बनेंगे ना. So 2 twos, 2 is the number. अगर आप देखिए 2 नंबर लिखा भी कैसे जाता है, it has lot of waves. This number has lot of waves. It's the number representing moon. So it has lot of emotional ups and downs. So जब दो साथ में मिलते हैं तो वो 4 बनता है, which is a number जो डंडा मार के ठीक कर देता है. 4 में देखिए ना कितने एंगल्स हैं. So that's what this whole year did to us. Emotional ups and downs. और हम सब सीधे हो गए. घर पे रहना आ गया, घर के काम करने आ गए, जो चीजें कभी नहीं की थी वो करनी आ गई. एक डिसिप्लिन सेट हो गया लाइफ में, एक पैटर्न सेट हो गया लाइफ में. Now 1
10-10, 2020. 1 is a new beginning. एक नंबर डंडे जैसा होता है. It's like a seed format. It has immense potential. एक नंबर आप लिखा 1 को, उधर सर्कल बना दो तो 9 बन जाएगा. ऐसे एंगल डाल दो 4 बन जाएगा. एक सर्कल लगा दो 6 बन जाएगा. डंडा लगा दो 7 बन जाएगा. 1 has immense potential. So from this time onwards, it's going to be a beautiful potential time for all of us to learn and develop new things within us. Wow, that is getting us to be more optimistic now. Thanks. One has to be. Yeah, I would want to ask you, like, men dominate this field of astrology, and you being here, did you face a lot of hurdles? And you've been excelling in it. See, I personally am not a person who would call that I'm a feminist. या मैं बहुत ज़्यादा women और ये सब. I believe both are necessary in life. Men and women both. They are interdependent, related. खाली औरतें संसार नहीं चला सकती और खाली आदमी संसार नहीं चला सकते. They have to be together. When I started, I never thought with the idea of कि ये male dominated है. I believe that we all have a man and a woman inside us. We have left hemisphere of mind and right hemisphere of mind. I am complete within myself. I can act like a man. I can be very diplomatic. I can be sometimes manipulative. I can be aggressive. I can be analytical. These are all masculine qualities, hence of your left brain. I can be very feminine. I can be very soft. I can be very nurturing. I can be very creative, very emotional. These are the qualities of my right brain. So I am well equipped to be like a man and a woman within myself. मैं इस बहुत ज़्यादा strange area of people behaving and doing this, भेदभाव मैं नहीं मानती. और अगर कोई करता भी है, I give a damn. Great for women empowerment. I would want to ask you, like, what is the astrology to you? Because you've changed the whole meaning of astrology in India. I mean, like, we used to think somebody maybe in those orange attire, maybe with some beads and stuff, and like, could you just say something on that? Fortunately or unfortunately, I'm wearing orange today. But, astrology, the way I used to see it, and my father, my parents never believed in astrology as a science. So if you go to my background, हमारे घर में दूर दूर तक कोई astrologer का लेना देना ही नहीं था. I was one of the first astrologers that I met was me, because I was 13 when I was able to read palms. For me, it is a beautiful guiding science. More than prediction, it guides you. It is a way of God showing you light or lantern. It's called Jyot-ish. Jyoti of Ishwar, Jyoti of divinity, light of divinity. It is meant to give you a path. It is not meant to decide for you कि भाई तुमको यही करना है. For me, it is a guiding science. आप आगरा जाते हैं या आप किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, आप लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखने जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कब बना, क्या पर्पस है इसका. आप एक गाइड हायर करते हैं, बोलते हैं यार ये 500 रुपए पकड़ और जरा मुझे ये सारा स्ट्रक्चर समझा. आप नॉलेज लेते हैं, से यू आर फैबुलस, थैंक यू सो मच, एंड आई गो henceforth. That should be a purpose of an astrologer. You take your fee, you give them guidance, and you move on. अब इसमें आप पैर छुएं, आप माला पहने, वो आपकी पूजा करें, वो आपके, what is the whole stupidity behind it? You have to be a guide. You're a guiding force for them. You don't have to do all these dramas for it. Well, if you naturally are like that, wearing rosaries, tika, great. But आपको एक setup की जरूरत नहीं है to be a guide. You can be like yourself to be a guide. Jay, you have a very different aura about yourself, and like you inspire so much in every way. I would say the way you talk, the way you dress up. So, is it like a lot of effort in all the facets? No, it naturally comes at effortless to me because I love to wear good things. I earn well God's grace and I spend well God's grace. The whole idea of us as Hindu religion was prosperity. हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि के पास भी कामधेनु गाय था. They had two wives. Well, I'm not supporting 2 wives, but all I'm trying to tell you is that we were always about prosperity. But dhire dhire with Buddhism coming into it, I'm not against Buddhism. I love Buddha.
But just to make you understand that spirituality has no connection with renunciation. It's a choice you make. सनातन धर्म is about prosperity. हम किसी भगवान को फटे हुए कपड़े क्यों नहीं डालते, हम उनको गंदे कपड़ों में क्यों नहीं देखते? Because for us it is about celebration each day. Then why are we connecting spirituality with chola, taking off clothes, simple clothes, no eye gloss, no lip gloss? Why the hell? I mean, why can't I look good and love the Lord? Why do I have to be simple and then love a Lord? My Lord wants me to look good like him. Why can't I be simple and natural? Great. That gives us more the option to go and shop at Sandook now. Please do that. So you were talking about spirituality. So I was asking you have this PhD in spiritual counseling. So what kind of people do you think that need this kind of counseling, the spiritual counseling? Everybody, like, see the way I talk about concept of Diwali. What does those names mean? Why do we call Lakshmi as Lakshmi? We don't understand. Religion is following somebody else's faith. All I want is a little logic and explanation combined with religion and faith can make us better in understanding, being more loving, more surrendering, more intelligent. This is what I want to bring into the whole field of spirituality and religion. What would you suggest somebody would want to take up this line of astrology? How would you guide them? So, one should never feel or be insecure. That's what I do. I don't know what other people do. And I don't know most of the people in the field also, because I only concentrate on myself and I only compete with myself. मैं पिछले साल से better होनी चाहिए हूँ mentally, physically, emotionally and financially. That is my only competition and set target in life. Am I more evolved than last year? Am I better as a person from last year? So I judge and manage and compete with myself. Next thing is that I want everybody to understand is that don't feel that your prediction makes you better. Your guidance makes you better. It is a guiding science. हम सोचे हम बोल दिया तुम्हारा ये होगा, नहीं. God is not a sadist जो आपके set pattern लिख कर आ रहा है. Then what is your free will? Beautifully, the science also has a free will. It always gives you option. It is like you are a doctor. अब आपको 5 दिन का फीवर है, कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि वायरल फीवर कल चला जाएगा. इसे 3-4 दिन लगेंगे. Have patience. But he will give you a paracetamol or a crocin कि आप खाओ, 6 घंटा बुखार ठीक रहेगा, जाकर काम करो, वापस आओ, फिर एक डोज लो. So similarly in astrology also we have remedies to make things better. Your mental state, your physical state, your emotional and financial state. Take it as a beautiful science, not as a hallucination or as a adventure of superstition. No, it's not. How would you manage to convince people who are non-believers in astrology? I have no intention to convince them. It's glad if you're not part of this vicious circle, because it's so damn addictive. If you ever get a right person to guide you or tell about you, you'll be stuck. So जो नहीं मानते हैं वो बड़ी अच्छी स्पेस में हैं. जो मानते हैं वो logically मानो. This is my whole pattern of it. I have no issues or no intention to change people to believe it. No need. जो मानते हैं वो ठीक से समझ जाएं, उतना ही काफी है. Great. I think we are done with a lot of questions. If anybody has one, please post it. Jed, would you have more tips to share with us during these trying times? Yes. हम Diwali par we always see gods and goddesses in different colors, but the most prominent and the natural color that we saw is golden. And golden color आते ही हम gold के साथ हमारा mind associate करते हैं ना, चमक आ जाती है. So this is what I would like to tell everyone or express to everyone कि इस time अपनी अंदर से gold की jewelry निकाल कर जरूर पहने. Bring this beautiful color as a color of prosperity in your life. Have golden cushions in your home, golden candles, golden light. जब हम दिया जलाते हैं तो golden light आता है ना. Gold jewelry. Bring a lot of gold, in your life during Diwali to attract more prosperity. There are some people asking if you take classes. Even I'm interested, Jay. Do you? I take classes very rarely
But and why do I do it? Because for me, it's putting things on path. I don't want anybody to hold my finger and walk through the life. I always feel I'm a guide. I can only explain, create, and give the whole concept and move on. That's what I do for little group of people every year for my as my part to bring it back, so that if I die, ये सब कुछ मेरे साथ ही ना चला जाए. So that is the whole motivation behind it, not something to fetch more money out of it. So I do it once a year or twice a year, seeing the time permits, for a few days to create the whole new pattern of journey. Super. We have such beautiful takeaways from our chat session today. It would be Thank you lovely, so and much. we will be inviting a lot of abundance this Diwali for sure. Thank you. A special jury has been constituted for some special prizes to our exhibitors at Sure. Sandook, and I request you to please announce 2 winners for today. Sure. So for the best display exhibitor, so the best display exhibitor is Happy Threads, and congratulations to them. and the most innovative exhibitor at Sandook. The most innovative exhibitor, the award goes to Sanvi, and my heartfelt congratulations to you, Sanvi. Thank you so much, Jay. It was Pleasure. amazing session, and I would just like to invite Neena Agarwal, our First Lady, to give a vote of thanks. Thank you very much, Savita. Namaskar, everyone. A very good afternoon. कभी कभी शब्द साथ नहीं देते कुछ अभिव्यक्त करने के लिए. हाँ, ये वही लम्हा है. बिल्कुल, मैं बिल्कुल निशब्द हूँ. जय मदान सामने और मुझे कुछ कहने के लिए कहा जाए तो मैं बिल्कुल निशब्द हूँ. Wow, what an amazing, beautiful session by world famous astrologer, Vastu expert, palmist, Dr. Jai Madaan among us. I, on behalf of Rotary Calcutta Mahanagar, an entire Sandook team, express my heartfelt gratitude for this live session. You are epitome of beauty and intelligence. Your session has enlightened all of us, and this Diwali we will have lot of abundance. My sincere thanks to our sponsor Kothari, which make this event a successful. And dil se shukriya Savita aapka, who was the MOC and instrumental in bringing Jai Madaan, the diva of today's. Thank you, Savita. Thank you, which made our Diwali a very special this time. Thank you, owners, exhibitor, Rotary members, friends, and each and every visitor who are here from all over the countries who are a part of this special session with our charismatic Jai Madaan. Ma'am, I'm a great follower of yours. Even my Thank you daughter so is a much. great follower of yours. Thank you so much. At last, I would say thank you is the least I can say to show you my appreciation. Thank you, Pleasure. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Savita. Over to Pranay. Yeah. Thank you, everyone. I think that was an awesome spellbound session. And Savita ji, you took it so well with Jai Madaan. Thank you very much. Thank you, everyone, for joining in. I'm sure we had a great session. And let us go back to our Sandook exhibition and enlighten everybody as to how the session was. And thank you, everyone, for joining in today. Looking forward to more sessions tomorrow. Savita, Savita, you want to add something here? No, thank you. Just go shopping, happy selling, and happy purchase. Yes. With all the tips. Yes. Thank you, Manish. Thank you, our tech Bye, team. everyone. Thank you, everyone. We now terminate the meeting. Bye.